Hello, friends. Thought of sharing some ideas with you. Hope that they'll be useful to you. Have you ever observed that there is a constant distress, a constant demand, or a constant feeling of discontent in the background of our minds? Have you observed that? कितना भी हमको मिले, जो चाहिए वो भी मिले, but there is a constant feeling of incompleteness. And this doesn't allow us to even experience the good moments, experiences in life. Now, do you know why this happens? This happens because we have two minds. We have two minds. One is a saner mind, a matured mind, a mind with intellect, logic, power of discrimination, जो सही है, सही नहीं है, इसके बीच में जो जो तय कर सकता है, वो एक माइंड है. And the other mind is like a spoiled child. No, it's very demanding. It forces things on us, even those things which are not good for us. वो सतत कुछ ना कुछ तो मांगते रहेगा. It wants some kind of activity or entertainment, some involvement in some or the other thing constantly. वो स्वस्थ रह ही नहीं सकता है. It wants something. आप देखेंगे, if you just generally observe, nowadays at least, you will see most of the people just engrossed in their phones. They can't be without their phones because now their mind, this spoiled brat, this mind now needs some kind of stimulus, a constant need for a stimulus. ये डिमांड करते रहता है, इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए. ये वो रिबेलियस टीनेजर होता है ना, वैसे है. उसको चाहिए तो चाहिए. वो फिर सोचता नहीं है कि ये सही है उसके लिए, नहीं है. दैट इट डजंट बॉदर. When it wants certain things and it gets attached to that. It becomes very fastidious. चाहिए, उसको चाहिए. And then it starts creating so much of burden, so much of pressure. क्योंकि चाहिए और वो मिलता नहीं है. Then this cycle of discontent begins. अभी ये जो माइंड है, अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हम पैदा हुए और पले बढ़े, हम इसी माइंड के माध्यम से फंक्शन करते हैं. This is the mind which has become dominant in us. This is the mind which has become powerful in us. So we are functioning with this mind and we follow the orders of this mind. इसके मन में कुछ आ गया तो आ गया. फिर दूसरा माइंड हमको कहने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो. अगर ये खाना आपके लिए सही नहीं है तो ये मत खाओ. नहीं, लेकिन ये माइंड उसकी सुनता नहीं है. ये माइंड कहता है कि इतना मत भागो, जस्ट रिलैक्स, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. नहीं, द फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट, dissatisfaction constantly drives this mind to the point of absolute stress, disaster. साइंटिस्ट कहते हैं ना कि 80 to 90% of the world's diseases are because of stress. They are psychosomatic.
क्यों? बिकॉज वी हैव नर्चर्ड दिस माइंड, दिस रेकलेस माइंड. क्या करें? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन देखो ना, हम इस माइंड के कंट्रोल में इतने हैं कि ऑप्शंस के लिए इससे बाहर जाना चाहिए ना. जैसे आइंस्टाइन कहते हैं कि यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम विद द सेम माइंड दैट क्रिएटेड इट. प्रॉब्लम ही ये माइंड तैयार कर रहा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए इससे बाहर निकलना पड़ेगा. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. इट नीड्स a kind of training, it needs a kind of understanding. But if you can do one simple thing, जब ये impulse आता है of doing something which is not right, just recognize that this is the demand of your spoilt mind. Just recognize. Don't stop it, don't do anything. This simple acknowledgement, this simple recognition will create a gap between the sane mind and the insane mind. Are you following? Just this recognition. Let this recognition grow. इसको ग्रो होने दो. कुछ बदलाव लाने की कोशिश मत करो, बिकॉज नाउ दिस इनसेन माइंड हैज बिकम वेरी पावरफुल. वो बदलाव नहीं चाहेगा, करने ही नहीं देगा, क्योंकि वो इतना पावरफुल हो गया है. हमने ही उसको पावरफुल बनाया है. Because we never knew that we also have a saner mind, or rather we never knew that what is building within us is an insane mind. और उसी के प्रभाव में आके हम insane हो गए हैं. Yes, we've become insane. So the initial option is, don't do anything, just recognize. कि ये जो इम्पल्स आया है, ये करने का जो इम्पल्स है, ये मेरे इनसेन माइंड से है. आई रिकॉग्नाइज इट. इफ यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, this sane mind will also start gathering mass, and eventually it will start becoming stronger. And then this will have a say, a choice. It will have some power over this insane mind, because then now this has become stronger. लेकिन इसको टाइम लगता है. ये ऐसा ओवरनाइट 1 minute solution नहीं है. But if you are amongst those, I would say, if you are amongst those lucky ones, जिनको ये कम से कम समझ में तो आ रहा है कि there is something within me which is not making me all right, keeping me all right. अगर ये जो डिस्कॉर्ड है, ये जो अंदरूनी डिस्कॉर्ड है, ये अगर रिकॉग्नाइज आप कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए सॉल्यूशन है. Majority of the people don't even know that they are getting carried away with this insane mind. They don't know, they just get carried away. उनके लिए तो ये वीडियो भी कुछ फायदे का नहीं है. It's of no use, because they are not in a frame to even accept this. So as I said, if you are lucky enough कि आपको ये लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, then maybe this simple option of recognizing कि ये मेरा रिएक्शन नहीं है, ये मेरे इंसेन माइंड का रिएक्शन है. let it do what it wants. ठीक है, but at least I have recognized, I have become aware.
This simple awareness will give you the strength, the power to come into balance. And this is what is required. सोचो इसके ऊपर and see if you can really implement it in your day-to-day life. Thank you for watching.